Okay, welcome you all to the class. Okay, so as usual, the students will go on, coming very late. Okay, so last time we had a class and we discussed about division of polynomials. So till now we have done two lessons. Till now we are done with two classes of this class 9 chapter 2 session. In first one, I introduced you with the polynomials, different types of polynomials we discussed, and the degree, okay, and like new terminology we discussed about the like terms, then degree, the number of zeros. Okay, we discussed all this. Okay, and along with that, we discussed the different forms of polynomial also. In second, we discussed the division of polynomials. Okay, today here class 9th and class 10th both are present. I requested class 10th also to attend the class. So please try to pay attention and revise the concept. So again, I welcome you all. And today we are going to deal with a very, very important concept of this chapter polynomials, a very new concept for class 9th. Maybe class 10th children are aware of it. So please, you will not answer. I just want you to revise your concept. I don't want you to answer right now in the session. Okay? Whatever will be your doubt, will be dear students, I request you that you will ask at the end of the session so we can clear it up later on and no disturbance in the class. Okay. So here we are discussing about polynomials. I hope you remember polynomials, and we are mainly right now what I'm discussing about a divisor as a binomial. Okay. In last session, we saw about division of polynomials, actual division of polynomials, right? Okay. And before starting the session, I just want to discuss few things so that even other children can, pay attention by the time. Few things I just want to clear it up, students. What pattern we are following is generally I take your class and then I request you for the I send you the notes and then I expect you to go through it, revise it, watch the video again in case of any doubts. Take your textbook, solve the similar question. If you have any reference book, you go ahead and solve it till I give you more questions on this. Okay, just attending the session and writing present is not enough. Right now you are at home. We are not meeting it on daily basis, one to one, personally, that I ask you, I go and remind you. Okay, so please, it is up to you, your own, that you have to find out that yes, I have to finish this work, I have to learn this, I have to relearn this. This is the confusing thing, so I have to clear myself. So that for that you need to ask me, you need to call me, you need to message me. Okay, so you need to find it out the ways how to learn it. Still आपको कोई भी confusion है that after repetition of watching videos you're not able to understand, then definitely you can call me up and ask me your doubts. Okay, so I just want one request, and I think today you must have heard Mr. Modi at 10 o'clock. He said it has been extended till 3rd of May. Okay, children. So I see one way we are worried that yes, we are locked up in our houses for such a long time. Other way, you can be happy that yes, because of this compulsion, we are not going out, nobody is moving out, and we are safe somewhere. Okay, when we talk about mathematics, we talk about statistics. I think it's a good statistics topic for you to collect the data. You must be watching the news and you must be comparing it. Okay, the ratio. Like India is one of the most populated country after second or third in the world. Okay, and compared to other countries' death ratio due to coronavirus, I think still we are on the lowest, isn't it? So why? Because why? The only reason we are inside our house, we are locked down. We are not meeting our friends. We do miss our friends. We do miss our school. We miss our regular visits outside. We miss the playground. Everything great. But the most important thing is we are safe. We are, sound and happy, and at least we are not, getting this contagious diseases. Once you are alive, yes, everything is fine. But once you're on bed, you can just remember, take your memories back and just check when you are not well. You like it 1 or 2 days, you are lying here on the bed. It's good.
But if it goes longer time, you're not moving out, it becomes very risky. And you know how infectious this is and how dangerous it is. So please control your feelings to go out and meeting your friends. No outings, no playground visits, please. Okay, and stay safe inside your house. So maximum way how to utilize your time is, that's why we are taking the classes here. Okay, that one way is to keep yourself busy. And this busy doesn't mean that whenever I'm telling you that come for the class, you come here live, you attend me, and then you forget me. Please don't do this. Yes, Ditya is correct. 9,000 to 10,500 in just 24 hours. So that's what I'm saying, how risky it is. And it's good that we are safe inside. Okay, so utilize our time to the maximum beneficial for us. No doubt you help your parents in the house and, let some relaxation because, moms will be busy cooking all the time because of some or the other reason, because you're hungry, you are home, everybody's home. So try to help her out. I don't say that every time you sit and study. Okay, but give some fruitful time, maybe limited time to your studies. You decide your work, and just give some exercise to your brain so that it remains healthy and sound. Okay, and busy, and give some exercise. And how exercise, I think max is one of the best things to give the exercise to your brain, isn't it? Okay, so we will continue with our classes. Along with our classes, I request you to continue with some mental exercises. Not only your physical exercises you will do, but along with that go with some puzzles, some quizzes, so that you give exercise to your brain also. Don't all the time sit before the TV and be with your mobile games. Okay, for some time, because by 24/7 you must be tired. So please, please, please try to remind yourself with some positive work, some fruitful work, which exercise with your brain and body both. Okay, so welcome you all again, and we start with a very important concept of remainder theorem. I think light is enough to you. Not it's all visible to you, right? Now here we are discussing a special condition here. Before we start the theorem, you have to understand where it is applicable. First of all, in previous class we did the division of polynomials. You know that how by actual method you find out the remainder and the quotient of the given polynomial. Okay, so here we shorten our work that when our divisor is a binomial. What is the condition? When divisor is a, one more word before that, a linear binomial. Okay, in of linear form. Either of I'll say it is a linear polynomial. That would be a better word for it. When our divisor is of linear polynomial, that is something like 2x plus 3 or x minus 2 or 4x plus 1, or say something with x plus 3. Okay, so in general, I write this as x minus a form. Okay, that if a binomial is of kind of this, it's a linear polynomial. That means our divisor, when the divisor is a linear polynomial, ठीक है? और linear polynomial को फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे decide करूँ that my linear polynomial is this. अब आप कहोगे मैम इसी तरीके से क्यों? Suppose it is 2x plus 3. Okay, then you can write this 2x plus 3 as x minus 3 by, okay, it is nothing but this way. Look at it. 2x plus 3 upon 2, and if I compare it with 0, it becomes 2x is equal to, okay, minus 3 by 2, and here also it is x is equal to minus 3 by 2 when I compare it with 0. So in general, first let me define and then we will see specific condition, how, what, and why. Everything. First listen to me. What does it say? When the linear polynomial is of the form x minus a, okay, when the linear polynomial, that is our divisor, is of the form x minus a, and it has to divide any polynomial in form of x. Our polynomial is px. When it is divided by a linear polynomial x minus a, okay, so you will remember all the steps, right? But the shorter is, how will you find out remainder? Okay, यहाँ पे ये जो हमें theorem जो help कर रहा है is basically to find out the remainder, और उससे हम आगे के factors निकाल सकते हैं. So listen to me. When px is any polynomial
and x minus a is a divisor, then remainder is equal to p of a. बिलीव नहीं हो रहा है ना कि क्या है, शायद दिमाग में भी जाने से हो रहा होगा. I'll just give you the example. Suppose I take any polynomial x square minus 3x plus 2 and I divide it with x minus 1. याद है ये डिवीजन लास्ट टाइम हमने किया था एक्चुअल डिवीजन से. तो x और x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हम फर्स्ट टर्म लेंगे. So we multiply with x into x square minus 1 into x, यानी कि x हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, subtraction plus, so minus 3x plus 1x, it is minus 2x plus 2. अब minus 2x को मैं x से डिवाइड करूंगी तो क्या मिल रहा है मुझे, minus 2. और फिर से यदि मैं इस minus 2 को से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, I get this is minus 2x plus 2. So we get this as 0. So here in this case the remainder is 0. इसका मतलब ये हो रहा है कि when I'm divided by x minus 1, I get remainder 0. Now look at it. Then I don't want to do all these long work. Okay, now compare it like this. What is px? Px is x square minus 3x plus 2. If you want to still understand this long division method, you can attend the previous class, which is totally focusing on actual division of polynomials. Okay, so यहाँ पे ये मेरा px है and the divisor is x minus 1. So when you compare it, what do you get? The value of a is 1. So what does the remainder says? The remainder theorem says. Remainder theorem says that remainder is equal to p of a. A is 1. So let's see. So x की जगह पे we will write 1 into 1 plus 2. So 1 minus 3 plus 2. तो ठीक है 0. देखो कितनी इजीली हमें 0 मिल गया. यहाँ पे इतने लंबे लंबे स्टेप करें तब जाके हमें पता चल रहा है बात. तो यहाँ पे हमें इतने छोटे से हमें पता चल रहा है. I'll take one more example. Okay, just थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देने की कोशिश की है. Okay, I'm repeating once again for the what is remainder theorem. Remainder theorem में suppose px is any polynomial, okay, and x minus a is any divisor, then remainder can be found it out using the remainder theorem by this way. Remainder is nothing but p of a. मतलब कि x की जगह पे वैल्यू रखनी है x minus a is equal to 0. जब मैं उसको 0 से कंपेयर करती हूँ, ओके, तो x is equal to a. तो x की जगह पे ये a की वैल्यू हम रखेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा that is called as remainder of the polynomial. One more example I would like to give you. Suppose मैं यहाँ पे ले रही हूँ x cube minus 3x square plus 4x plus 5. I divided with x minus 2 suppose. ठीक है, थोड़ा सा ये स्पीड में ले रही हूँ because I have already taught you this concept. Okay. So x cube, so I divide here with x square. So x cube minus 2x square minus plus minus x square plus 4x minus sign minus minus. So multiplying with plus 2. Remainder is 9. Okay, now I will check it with remainder method. I'm just showing you, no need to do this 2 steps, but I'm just showing you how it works. Is it correct or not? Let's take here. So this is x minus a. हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? x minus 2. तो इसके कंपेयर में आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है? 2. What is our px? It is x cube minus 3x square plus 4x plus 5. So this is nothing but 2 का cube. Okay, ये सारे steps हमें नहीं करने. When they say that you find out using the remainder theorem, मतलब आपको actual division नहीं करना है. ठीक है? So please learn this method. So 3, फिर again 2 का square plus 4 into 2 plus 5. So this is nothing but 8. 2 square 4 3s are 12 plus 8 plus 5.
So 8 and 8, 16. 16 and 5, 21. 21 minus 12. Isn't it 9? Same. तो हम इतनी लंबी चौड़ी मेहनत यहाँ पे क्यों करें? So if you are asked that using actual division, then only you will go with this. Otherwise, we are going to follow this method. What is this called? Remainder theorem. So what does remainder theorem say? Finally, we are concluding here for this. The remainder 7 theorem says that when a polynomial px is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. So we get the remainder directly over here. Okay, अब इसका आगे use क्या है that we will see. And before going for the use further, we directly switch over to the other theorem which says this is a factor theorem. पर यहाँ जाने से पहले again I go back to your arithmetic numbers के साथ. So please pay attention to that. In your class 5, okay, in your class 5 you learned the division of concept to the maximum level. ठीक है, मैंने एक simple number लिया 25 divided by 3, 25 divided by 26 divided by 3 and 27 divided by 3. Okay, I'm taking just 3 numbers. So I did the division. So what you can see here and observe it. Okay, in one case I'm getting the remainder as 0. In the second case I get one of the cases is remainder 1 and one case I get remainder 2. So when I get remainder 0, what will I conclude? You remember arithmetic, maths, arithmetic part related to your numbers. So what the relations you see between the dividend and divisor here? When you get remainder 0, you can conclude that this number, the divisor, is a factor of your dividend. Am I right? When you get remainder 0, you can say that divisor is a factor of dividend. ये आपने पहले सीखा हुआ. Okay. Now come back to this part. Okay. When we deal with the polynomials, okay, and when we divide it with a binomial, okay, using this shortcut method, I get the remainder. And if, now listen to me please, if this remainder is 0, okay, if this remainder is 0, ये हमने पहले definition of 0 में किया है. If this remainder is 0, then you will say that a divisor, जो हमारा divisor यहाँ पे क्या है, x minus a, x minus a is a factor of px. Okay, सीखने में थोड़ा सा सिंपल है बट कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा क्लैश या कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ. कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी बिफोर एंडिंग द सेशन. वी विल अगेन गो बैक कम टू दिस. सी, मैं यहाँ पे दो चीज की बात कर रही हूँ, दो चीज को कनेक्ट कर रही हूँ. वन इज रिमाइंडर थ्योरम, द अदर इज अ फैक्टर थ्योरम. पहला स्टेप है आपका रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट डज द रिमाइंडर थ्योरम से? ये वाला x minus a is dividing any polynomial, then remainder is equal to p of a. मतलब कि x की जगह पे आपको a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो आपका वैल्यू आएगा that is the remainder. Finish? This is called remainder theorem. We say to find out the remainder. अच्छा, अब इसके आगे जाते हैं. What does the factor theorem says? If the remainder, जब डिवीजन होता है या आइदर एक्चुअल डिवीजन या रिमाइंडर मेथड से, कोई भी मेथड से, जब हमें डिवीजन पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, फाइन, आई होप आई एम वेरी क्लियर, व्हेन द रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइजर इज अ फैक्टर. ये रूल हम अलजेब्रा में भी यूज कर रहे हैं, अरिथमेटिक में भी यूज करेंगे. व्हाट डज इट से? दैट व्हेन द रिमाइंडर इज 0 the divisor is a factor of a dividend. तो उसी लॉजिक के साथ यहाँ पे when this remainder is 0, okay, when this remainder is 0, the dividend, the divisor is a factor of the given polynomial. Okay, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और उसे प्रॉपरली कर रही हूँ. किस स्टेप से पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, और किस तरीके से उसको हमें अप्लाई करना है.
It's really one of the important concepts, and you can see it's important again. You can see how who all are present here. Here, class 9 and class 10, both the classes our children are combined today because this is the concept question. Many of my students are confused. Okay, so this will give you the clear picture of how it works. Okay, so please pay attention. पहले statement समझते हैं. Just a second, please. आपको ये कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी. हम यहाँ पे दो चीज डिस्कस कर रहे हैं एंड फैक्टर थ्योरम. ठीक है, दो चीज डिस्कस कर रहे हैं. रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर देगा और फैक्टर थ्योरम से हम कंक्लूड करेंगे कि whether divisor is a factor or not. और ये सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट से पता चलता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है. ओके, और दूसरी चीज प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे. जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो आपको समझ में आ गया कि फैक्टर है. ओके, और इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये फैक्टर है, इसका मतलब आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ आपको रिमाइंडर देगा, बट फैक्टर थ्योरम दो वे से अप्लाई होगा. किस तरीके से? इफ रिमाइंडर इज 0, वी कैन कंक्लूड दैट द डिवाइजर इज अ फैक्टर. ओके, एंड when we say that or we are given with that yes, this divisor is a factor, that means the remainder has to be 0. I hope it is clear both the ways. ठीक है, इसका मेन ध्यान तब रखना है जब आपको इसको अप्लाई करना है. So right now just basic application of remainder theorem. Okay, suppose that this is x minus 2, मैं थोड़ा सा अलग ले रही हूँ, x plus 2 okay is a divisor and a polynomial is x square minus 4x cube 4x square plus x plus 8. ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या कहेंगे यहाँ पे? यस, क्या कहेगा रिमाइंडर थ्योरम आपको? वो आपको देता है रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ, अब थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मैंने साइन चेंज किया. हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कह रही है, x माइनस ए. तो आप x प्लस 2 को x माइनस ए फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो वी कुड राइट दिस एज x माइनस माइनस 2. डू यू गेट दिस? ओके, या तो सिंपल इस लॉजिक के साथ x माइनस ए इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to a. तो उस लॉजिक के साथ x plus 2 is equal to 0, प्लीज यहाँ पे दे दीजिए, x plus 2 is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2. तो इन शॉर्ट आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी साइन है, तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में, it will always have the opposite sign of it. I hope I'm very clear with it. Since our binomial we have defined as x minus a. ओके, या तो फिर इसको इक्वल टू 0 करके याद रखिए. इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी डिवाइजर में साइन है उसकी उल्टी साइन पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. सो p of minus 2, let's substitute it. It is minus 2 cube. अगेन अब मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा दूं तो आपको यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं. एक तो आपका अल्जेब्रिक, ओके, प्लस यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब्स का चल रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग हियर, एंड अलोंग विद दैट इंटीजर्स. सो बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर माइनस एंड प्लस साइन. सो माइनस 4 into minus 2 का स्क्वायर plus minus 2 plus 8. So be careful about the brackets. So minus 2 का cube, you always know that the odd powers gives you the minus sign. और उसी लॉजिक के साथ minus 2 into minus 2 into minus 2 gives you minus 8. minus 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 4 4s are 16 and this 2 negative sign positive and this here. So it continues with this minus 2 plus 8. Okay, all negative. 8 into 10 is minus 26.
plus 8. So 300, yeah. So minus 80 is the remainder. I hope I'm very clear how to apply it. और सिंपल है जो अपनी छोटी क्लासेस में फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं रिमाइंडर दैट्स ऑल द मेथड इज the naming ceremony has been done but you are used to doing the sums in your lower classes substitution of value okay अब मैं इसको थोड़ा सा ये करती हूँ क्वेश्चन सेम है आई मीन एग्जांपल इज सेम सी लुक लिसन टू माय क्वेश्चन सो पहले यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड रिमाइंडर so that's all done sum is over fine अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है for given polynomial when divisor is x plus 2 check whether x plus 2 is a factor of given polynomial I hope I'm clear question is check whether x plus 2 is a factor of this px check whether x plus 2 is a factor of this px तो अब आप क्या करोगे तो आपका सॉल्यूशन सेम शुरू होगा पहले आप px लिखोगे फिर रिमाइंडर थ्योरम फिर आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किया अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 18 which is not equal to 0 and therefore by factor theorem क्या कंक्लूजन करोगे आप ओके जब आपका रिमाइंडर 0 है तो आप क्या कंक्लूड करते हो इट इज अ फैक्टर and remainder is not a zero like it doesn't give the value 0 and hence we can say therefore x plus 2 is not a factor of given px. The only thing is your two statements are increased when the question is framed in different way. पहले मैंने आपको पूछा फाइंड द रिमाइंडर तो आपका आंसर यहाँ पे कंक्लूड हो गया पर फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया चेक और फाइंड और वेरीफाई whether x plus 2 is a factor of this तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं और यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में रिमाइंडर 0 नहीं है और इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस ओके सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मैक्सिमम यूसेज क्या है ओके टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट रिमाइंडर simple application direct to find out remainder to find out whether it is a factor or not and then to factorize further I hope I'm very clear with this तो ये वाला जो सम है इट बेसिकली आंसर्स ओके तो इसी के बेस पे आपके पॉलिनोमियल्स हायर होते हैं बट हियर आपकी एक ही कंडीशन जो फुलफिल हो रही है बार बार वो क्या है दैट आप लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस a से जब आप डिवाइड करते हो तभी ये अप्लाई है इफ आई से माय divisor is x square minus 2 then I cannot apply remainder or factor theorem is it very clear to all of you ओके यहाँ पे आप यदि x स्क्वायर माइनस 2 से किया है और कोई आपको कहे रिमाइंडर फाइंड करिए तब आप ये वाला थ्योरम नहीं यूज कर सकते आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स ओके जब आपका डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है तभी होता है अब आई जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन अदर फॉर्म किस तरीके से पूछा जा सकता है तो मैंने यहाँ पे आपको फैक्टर थ्योरम भी बताया है ओके तो फैक्टर थ्योरम की इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से आती है दैट विल सी एंड इट इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे वापस कंबाइन किया दैट बिकम्स अ रिवीजन फॉर यू आल्सो तो ये दोनों क्लास के लिए वेरी कंबाइंड क्वेश्चन आता है जैसे आपने देखा एक्चुअल डिवीजन क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस हो चुकी है ओके क्लास 9 10 को ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ बट अगेन जस्ट फॉर द रिवीजन वर्क आपको ये करना है और दूसरा चीज आप यहाँ पे क्यों हो बिकॉज दिस क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इट कम्स विद क्लास 9th also it comes with class 10th also okay so it is said like this ओके तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट डज इट से फाइंड k if x minus 2 is a factor of x square minus 5x
Okay, sorry, मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, so I think you got the idea. Okay, let me change my question to hmm, okay, I'm changing my question to this. Find k if x plus 2 is a factor of x square plus 6x plus k. तो हमें यहाँ पे जैसे मैंने कहा था there are two ways application for factor theorem. What does it say? Factor theorem that suppose given polynomial का factor हमें दिया हुआ है. If x plus 2 is a factor, then the remainder has to be 0. तो किस तरीके से हम करेंगे प्लीज देखिए. पहले तो हम px को डिफाइन कर लेंगे. Like px is equal to x square plus 6x plus a. Since x plus 2 is a factor of px, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं प्लीज ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हो. सो प्लीज इट मेंशन इट हियर बिकॉज इट कैरीज द मार्क्स. Therefore, by factor theorem, yeah, already somebody has given the answer. Very true. Therefore, P of minus 2 is equal to 0. But please मैं यहाँ पे एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगी. Many of you knows the answer also. But मेरी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? The students don't follow the steps. मैं repeatedly कह रही हूँ the students need to learn to follow the steps. वो क्या करते हैं ये जीरो खा जाते हैं अचानक से फिर कहीं जीरो आ जाता है. They don't write what is which theorem is applied. So again those who are present with me here, I request you that you go for the steps. आप जब शुरू में ही जब लर्न कर रहे हो तो मुझे आंसर से साथ के साथ मुझे इसके स्टेप्स भी चाहिए that you write it perfectly. So p of minus 2 is equal to 0 and therefore how will you get 0 by remainder theorem? So it is minus 2 का square plus 6 into minus 2 plus k is equal to 0. That is 4 minus 12 plus k is equal to 0. Minus 8 plus k is equal to 0 and hence k is equal to 8. I hope I'm very clear to this. Okay, yes, some of you gave the answer k is equal to 8, absolutely correct. But again, my focus is also on the writing. That is your presentation. मुझे ये पहले ही ये चाहिए that yes, it is a factor and hence we can say using the theorem that remainder is 0 and hence we get it in the equation form and we get the value of k. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, क्लास 10th is already having such practice question and class 9. आई होप कि जो आज का आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया हो. ठीक है. So please, what I request is pay attention to the concept to return work. Very funny thing I would just like to tell you. आप लोगों का जनरली क्या होता है? You hurry up in completing the task. जैसे कि एक सिंपल सी चीज बताऊं कि लास्ट टाइम क्लास खत्म होने के बाद I gave you the attendance sheet, right? Google फॉर्म में मैंने attendance sheet रखी है, which you have to go and fill it out. You go. कुछ भी चीज को आप ओपन करते हो, whether it is your related to your study, open it and read it. Don't be always in hurry to finish off the things. There were students who don't even see what are they writing. They don't even see what are they answering for. So it should not happen, children. Always first look at the question. मैं ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर जगह के लिए, when in the classroom, when you answer, or whenever you answer somebody at home or outside, or it may be anything. Okay, you listen to the question or you look at the question. क्या क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आप आंसर दो. Whether it is just filling up the attendance sheet or whether it is your math question or it could be your science or other subject. It has to be clear what is the question. जब आप क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दोगे तब आपको आंसर समझ में आएगा. You can't just write whatever you want to. Okay, you have to be very precise. ना extra लिखना है ना कट ऑफ करना है. You have to be systematic. और मैथ्स में जैसे मैंने अभी कहा हमने एक ही क्वेश्चन किया. ओके, अदिति आई एम क्लियरिंग अप टू योर डाउट. Aditya's question is, can you please re-explain the questions? Okay, that is what I'm doing it. So basically आपको आपके क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस देना है. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बहुत नजदीक से बहुत थिन लाइन आ जाती है. ओके, मतलब कि जब रिमाइंडर खत्म होता है तब फैक्टर थ्योरम शुरू होता है. तो जब रिमाइंडर थ्योरम होंगे तो बेसिक क्वेश्चंस यही है. ओके, फाइंड द
रिमाइंडर, बहुत सिंपल हो गया। पर जब इसको फैक्टर थ्योरम के साथ कनेक्ट करते हैं तब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो ऐसे कहेंगे फैक्टराइज, अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, तभी इसकी रियल एप्लीकेशन आपको शुरू होगी। सो आदित्य, वी वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस मच क्वेश्चन, बट यहाँ पे फिलहाल वी विल स्टॉप बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग ऑफ इट। ठीक है, और दूसरी चीज की मैंने अभी तक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की नोट्स आपको सबमिट नहीं किया। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड विद यू, जो मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस किए, आई मीन हर ऑनलाइन क्लास में मैंने डिस्कस किए, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ओके, द सेम वर्कशीट आई एम फॉलोइंग इट टू बोथ द क्लासेस 9th as well as 10th, बिकॉज ये दोनों का कॉमन कॉन्सेप्ट है। फाइन, इस टाइप के क्वेश्चन इवन 9th में भी आ रहे हैं, 10th में भी डेफिनेटली आ ही रहे हैं। ओके, तो वो मैं भेज रही हूँ। फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन है, हाउ एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट, अभी जो हमने किए हैं वो वेरी बेसिक क्वेश्चन किए हैं ऑफ 2 marks, दैट फाइंडिंग के और फाइंडिंग रिमाइंडर और फाइंड वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। वी विल बी डूइंग द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ दिस, इट विल टेक टाइम टू गो हेड विद दिस। अभी इसके बाद सो डिवीजन ऑफ एक्चुअल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हमने फिनिश कर चुका है, एंड वी डिस्कस हियर फैक्टर एंड रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, तो इसके साथ ही इसके कनेक्टेड में ही आई एम सेंडिंग वन वीडियो, इट विल टेक टाइम फॉर अ डे, I will send one video link to you all of middle term splitting. Yes, I know that I've done it in 10th and still they have doubt. And for class 9th, you have middle term splitting again, though you have done it in class 8 basics, but here you will be dealing with the real numbers also. तो आज की क्लास में यहाँ पे ही फिनिश करूंगी। बिफोर एंडिंग प्लीज लुक एट द अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं लिंक आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ, बट आई वांट यू टू रिवाइज दिस एंड प्रैक्टिस इट। एंड आदित्य, इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं, वही 2 पार्ट्स वाले क्वेश्चन हम रख रहे हैं यहाँ पे, फाइंडिंग के, फाइंडिंग द रिमाइंडर और चेक वेदर given polynomial is a factor of the like a divisor is a factor of a given polynomial. बस इसी टाइप के क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं डिस्कस करूंगी। So children, please revise the concept and again stay home, you will not go outside. Okay, think your home also only as your playground and everything. Control yourself, have some peace of mind and enjoy your classes. Thank you children. I'm sending you the link before I end up the class, and even class 10 children will fill up the same. Okay, please, you will also copy the same link. So here also I'm posting along with this, I'm posting it in your group, so any one time you have to send me. Okay, thank you children, bye. Yeah, just one more thing I would like to say, if you want to, whatever the thanks and